Hello बच्चों, let's read the question. The question says that convert the following in the polar form and the expression is 1 plus 7i upon 2 minus I whole square. So इस क्वेश्चन में हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो उसको करने के लिए सबसे पहले हम ये समझेंगे कि यहाँ पर की कॉन्सेप्ट कौन सा यूज हो रहा है। So key concept used here is representation of complex number in polar form. So suppose हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z which is given by a plus ib, then हम उसे पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं as z is equals to r cos थीटा प्लस i sin थीटा, जहां पर r क्या है, r इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड थीटा इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z. सो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके वी कैन गेट द पोलर फॉर्म ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर. So let's start the solution of this question by taking the given complex number as z. So we will take our complex number z लेंगे, that is 1 plus 7i upon 2 minus i whole square. So पहले इसको हम simplify करके इसको standard form में convert करेंगे, then we will find out the value of r and theta to write it in polar form. सो सिंप्लीफाई करने के लिए डिनोमिनेटर में a माइनस बी होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी का यूज करके वी विल गेट 1 प्लस 7i अपॉन 2 स्क्वायर इज 4 minus 2 into 2 that is 4i and I square that is minus 1, so we'll get here minus 1, which we will get as 1 plus 7i upon 3 minus 4i. अभी भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर z है वो है 1 प्लस 7i अपॉन 3 माइनस 4i. सो इसको हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से दोनों जगह न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे. तो 3 माइनस 4i का कॉन्जुगेट 3 प्लस 4i मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल गेट व्हाट, 1 into 3 3, 1 into 4 that is 4i, 7 into 3 is 21i, 7 4s are 28, so minus 28 because I square is minus 1. Similarly denominator में a square minus b square आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं because it is in the form of a minus b, a plus b है. So यहाँ हमें मिलेगा 3 square is 9 and 4 into 4 16, I square minus 1, so minus minus become plus और हमें यहाँ मिलेगा 9 plus 16. So final answer is 3 minus 28, that is minus 25, plus here we will get 25i, so 9 plus 6 25. So इस प्रोडक्ट का फाइनल आंसर हमें मिला minus 25 plus 25i upon 25, जिसको फर्दर सिंप्लीफाई करके हमें मिलेगा minus 1 plus i. So we have converted our complex number in standard form. So when we compare this standard form with the standard form of complex number, that is a plus ib, हमें a की वैल्यू मिलेगी -1 और b की वैल्यू मिलेगी 1. So using these values we know that r is given by what? R is given by under root a square plus b square. So let's substitute here. We'll get r is equals to under root minus 1 square plus 1 square. Minus 1 square 1 होता है, 1 square भी 1, so 1 plus 1 is 2. So we'll get value of r as root 2. So we have got the value of r. Now we'll go for value of theta. So for that हम क्या करेंगे, we take alpha be an acute angle.
हमने कोई अल्फा ले लिया जो एक्यूट एंगल है and is given by what? It is given by tan alpha equals to modulus of imaginary part of z upon real part of z. Okay, so let's find out tan alpha here. So we'll get here tan alpha is equals to modulus of 1 upon minus 1. Modulus function does what? It converts all negative values to positive. So हमें यहाँ मिलेगा tan alpha is equals to 1 और alpha will be equal to tan inverse 1 which is equal to pi by 4. So हमें alpha की वैल्यू मिल गई pi by 4. तो since ये complex number है तो let's draw the complex plane. Okay, so let's draw the complex plane. Here vertical line is imaginary axis, horizontal line is real axis, और point of intersection is origin. So origin के left और below negative, right और above positive होता है. So if we look into the value of a and b, our real part is what? Negative, and our imaginary part is positive. So it means our complex number z will somewhat lie in second quadrant, because this is real and this is imaginary. Positive means above, negative real means left side of 0. So we'll get in the second quadrant. So from here we can conclude that z lies in second quadrant. Z lies in second quadrant of complex plane. Therefore, the argument of z, theta, which is argument of z, will be given by what? It will be given by pi minus alpha. So we have pi, alpha we have already got as pi by 4. Simplify करने पर हमें यहाँ मिलेगा 3 pi by 4. So we have got the value of r, we have got the value of theta. Now polar form of z is given by z is equals to root 2 cos 3 pi by 4 plus I sine 3 pi by 4. So the final answer for this question is z is equals to root 2 cos 3 pi by 4 plus I sine 3 pi by 4. So I'm sure everybody must have understood it well. Thank you. Best of luck.